समस्त को नमस्कार पिला माने जय जगन्नाथ मैं आपको स्वागत जनाऊँ आम आउ एक भिडियो तो पिला माने आपण माने समस्ते फास्ट सेमिस्टर क्लास आमर करूछंती जो मानकु भी आमर हैंडरिटेन नोट्स भल लागुची आ से माने परचेस करबा को चाहूछंती तो स्क्रीन ऊपर आपन को नंबर शो करूची एथिरे आपण कांटेक्ट करंतु आपनकर हैंडरिटेन नोट्स प्राइस आपन को 5टा बही आमर जोरा 500 रहउची सेटा आपन को केवल 400 आसीबो तो एबे ही कांटेक्ट करके नोट्स परचेस करंतु आउ क्लास आम क्लास अटेंड करिबा क्लास अटेंड कला पर आपन जुलाई मास जो एग्जाम रहउची सेथिबा समस्त की ऑल द बेस्ट आउ जहाँ भी आपन डाउट रहइबो किछि भी आपन क्वेश्चन रहउची आपन हमको कमेंट माध्यम जणाई परिबे तो चलंतु आम क्लास आरंभ करिबा। हेलो स्टूडेंट वेलकम टू साइक्रिष्णा इंस्टीट्यूट एंड श्री इंस्टीट्यूशन आज आम पढ़ा तुम B.Ed रो फर्स्ट सेमिस्टर रो फिजिकल साइंस पेपर रो फर्स्ट यूनिट जोटा कि अच्छी इंट्रोडक्शन टू साइंस एंड फिजिकल साइंस पिला माने तुम माने तो ये फर्स्ट फिजिकल साइंस पेपर टू पढ़ो ता पूर्व तुम पढ़ा दरकार जे साइंस कौन साइंस रो कौन आम लाइफ रे साइंस रो इफेक्ट अच्छी साइंस पढ़ा द्वारा आमको कौन माने हेल्प मिलूची दैट इज द इम्पोर्टेंस एंड साइंस रो नेचर कौन ए साइंस टा ही कौन आ साइंस रो कौन कौन स्कोप्स अच्छी तो पिला माने प्रथम आम पढ़ा मीनिंग ऑफ साइंस तो साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कौन साइंसिया सेरा व्हिच मीन्स नॉलेज और टू नो साइंस गोटे लैटिन वर्ड रु आसी जहार माने होची साइंसिया जहार मीनिंग होची नॉलेज तो डेफिनेटली हमें कहि परिबा साइंस माने कौन साइंस इज अ नॉलेज साइंस होची नॉलेज साइंस माने होची नॉलेज तापर तुम मन रे क्वेश्चन आसुथिबो को प्रकार नॉलेज ना जो नॉलेजटा आमे एक्सपेरिमेंटली प्रूव करिचे जो नॉलेजटा आमे कौन करचे एक्सपेरिमेंटली प्रूव करिचे In other words, science is the concerned human effort to understand better the history of natural world, how the natural world work. कहिया को गले साइंस होची सेई जिनसटा जोटा कि कोथरे तयारी हेची ना गोटे वर्ल्ड को गोटे बेटर वे रे जानिबा पई वर्ल्ड रो हिस्ट्री वर्ल्ड रो प्रोसेस से सब को जानिबा पई साइंस होची गोटे सेई प्रकार रो नॉलेज जी हमको केमिति पृथ्वी सृष्टि हैला केमिति लाइफ स्टार्ट हैला लाइफ प्रोसेस केमिति होची आम बॉडी भितर कोन सब ऑर्गन अछि केमिति नेचुरल इवेंट सब होची बात्या बन्या ठु आरंभ करी एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग्स अराउंड अस इज साइंस. So, the science is the organization of our knowledge in such a way that it commands more of the hidden potential in nature. किए ताको कहितले ब्रोन्स्की कहितले साइंस होची गोटे आम नॉलेज रो ऑर्गेनाइज्ड बॉडी जिए कि जो नेचर रो हिडन पोटेंशियल अछि ताकू कोन करूची सो करूची तो कहिए को गले साइंस इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज साइंस इज अ मेथड ऑफ इंक्वायरी ए वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड इज एन एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ ए वे ऑफ थिंकिंग साइंस होची बॉडी ऑफ नॉलेज आमे कौन इनक्वारी करूचु आमे जहाँ इन्वेस्टिगेट कर पाउचु दैट इज ऑल साइंस. एबे आमे भल से बुझी पारले जे साइंस रो मीनिंग कौन ना फर्स्ट ऑफ ऑल आमे जानिले जे साइंस गोटे कोठु आसीची लैटिन वर्ड रु आसीची जहार मीनिंग हो जहार ना होची साइंसिया आ जहार मीनिंग होची नॉलेज तापरे आमे तक सही नॉलेज को एक्सप्लेन करूचे जे को प्रकार रो नॉलेज आमे साइंस रु पाउचे को नॉलेज ना जो नॉलेज ता आमे हम प्रीवियस हिस्ट्री रु पाउचे आमे एक्सपेरिमेंट रु पाउचे आम बॉडी प्रोसेस रु पाउचे ए सब होची नॉलेज जो नॉलेज ता होची साइंस. Then आमे पढ़िबा नेचर ऑफ साइंस. साइंस इज अ सिस्टम. It is a system of knowledge where so many facts are related together. बुझी पारलो ना साइंस होची गोटे सिस्टम जो थरे कि बहुत सारा नॉलेज निज निज भितरे कौन हेचंती रिलेटेड अछंती. साइंस इज बोथ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस. साइंस भी प्रोडक्ट साइंस भी प्रोसेस. साइंस इज ए सिस्टमटाइज्ड लर्निंग
साइंस होची सिस्टमेटिक लर्निंग साइंस हेल्प इन बिल्डिंग द सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड सिस्टमेटिक अप्रोच टू द प्रोब्लेम साइंस होची कौन करे ना साइंस आम भितर सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाए आउ कौन करे गोटे सिस्टमेटिक अप्रोच गोटे प्रोब्लेम को सॉल्व करिवार कौन कैपेसिटी जागृत करे साइंस हेल्प इन ट्रेनिंग द चिल्ड्रेन फॉर डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड साइंस आमको ट्रेन करे छुआ मानक भितरे गोटे साइंटिफिक गोटे रिसर्चर एटीट्यूड आने आग्रह बढ़ाए आगु आगु नुआ नुआ जिनस जानिबार इच्छा शक्ति को साइंस बढ़ाए साइंस ऑलवेज रिमेन्स इन द सर्च ऑफ ट्रुथ साइंस सबुबले साइंस केबे एंड ही जाएने साइंस सबुबले सत्य को खोजिबार पथरे अग्रसर होउथाए इट्स अ कंटीन्यूअस प्रोसेस साइंस प्रेडिक्ट फ्यूचर साइंस फ्यूचर को प्रेडिक्ट करे जदि वर्तमान आमे केमती वेदर ब्रॉडकास्ट करछे ना नहीं दैट इज आल्सो साइंस केमिति ना आमे पूर्वानुमान कर दौचे जे काली वर्षा हब तुम फोन को मेसेज आस जाउथिबो जेतेबेले तमरो कोन होतिबो आगु जदि काली वर्षा हबार थिबो तुम फोन को पळे आस्थिबो जदि काली प्रबल खरा हबार थिबो तुम फोन को इन्फॉर्मेशन पळे आस्थिबो केमिति किए दउछ ताकू ना वेदर ब्रॉडकास्ट से कौन करुची प्रेडिक्ट करुची ये फ्यूचर ऑब्वियसली आजी पाई कालीटा होची गोटे फ्यूचर तो साइंस कौन करे फ्यूचर को प्रेडिक्ट करे साइंस स्टडीज नॉन लिविंग थिंग्स मटेरियल एंड सब्सटेंसेस खाली साइंस माने आमे जीवन कहबानी साइंस नॉन लिविंग थिंग्स को भी स्टडी करे लाइक फिजिक्स मटेरियल्स एंड सब्सटेंसेस साइंस इज डायनामिक साइंस होची डायनामिक जोटा कि सबु बड़े चेंज होउथाए हैला देन ए साइंस रे कौन कौन स्कोप अच्छी तमें माने तो बहुत भल से जानिथिबो जेतेबेले तमें माने +2 साइंस पढ़िल यू हैव मेनी स्कोप्स इन साइंस देन तमें तो बड़े +3 करल देन तम पाखरे आहुरी एरियाज खोली गला तो कौन कौन स्कोप अच्छी साइंस रे हमें पढ़िबा द स्कोप ऑफ साइंस इज इनफिनिट एग्जैक्टली साइंस रो स्कोप आज जाए कहीं आकलन कर पारना डिफरेंट डिफरेंट फील्ड अच्छी स्कोप ऑफ साइंस इज एन वाइडर एज देन एनी अदर सब्जेक्ट साइंस रो स्कोपटा अदर सब्जेक्ट अपेक्षा बहुत वाइडर इट हैज मेनी ब्रांचेस इन दिस तार निज भितरे बहुत सारा ब्रांच अच्छे जमती फिजिकल साइंस बायोलॉजिकल साइंस एस्ट्रोलॉजी बुझ पार कि नहीं फिजिक्स इट हैज मेनी ब्रांचेस इन दिस फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ फिजिक्स होची कौन स्टडी ऑफ मेकानिकल पर्पस केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल्स एस्ट्रोनॉमी इज द स्टडी ऑफ होल यूनिवर्स एस्ट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ज्योतिष शास्त्र हम कहूना बॉटनी इज द कंप्लीट स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड जूलॉजी इज द कंप्लीट स्टडी ऑफ एनिमल्स द एबव ब्रांच अगेन हैव नंबर ऑफ सब ब्रांचेस खाली कहीदेले हम नहीं फिजिकल साइंस रे भी डिफरेंट ब्रांचेस अच्छी केमिकल साइंस रे भी डिफरेंट ब्रांचेस अच्छी जूलॉजी रे भी डिफरेंट ब्रांचेस अच्छी लाइक माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी so science itself a wider subject which has many sub branches and that sub branches also have so many sub branches so it's like a puzzle but आमको मन रखा हम जे साइंस रो स्कोपटा होची कौन वाइडर अदर सब्जेक्ट अपेक्षा जमती कि तुम बहुत माने कॉमन जिनस मन रख फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी जियोलॉजी भी तुम कर जियोलॉजी होची भूतत्वविद देन इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस एबे हमें आसले साइंस रो इम्पोर्टेंस actually the modern world is created by science and maintained by science बुझी पारल कि नहीं ये जो मॉडर्न वर्ल्ड आज देखुच द हाईली कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ देयर डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजिकली मॉडिफाइड सोसाइटी जो आम देखुचे हेटा कहा द्वारा संभव होइची ए मॉडर्न वर्ल्ड कहा द्वारा संभव होइची साइंस द्वारा संभव होइची आउ साइंस द्वारा ही चालुची तमे चालुच गाड़ी रे दैट इज साइंस तमे पादरे चालुच चप्पल पिंच ना दैट इज साइंस
तो साइंस ही हमको चलाउची ए जो मॉडर्न वर्ल्ड रे साइंस ही हमको चलाउची द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ साइंस इज न्यू क्रिएशन इन्वेंशन डिस्कवरी एंड टेक्नोलॉजी साइंस रो मेन एम होची नुआ नुआ क्रिएशन करिबा नुआ नुआ जिनस को उद्भावन करिबा नुआ नुआ डिस्कवरी करिबा और नुआ नुआ टेक्नोलॉजी को कौन करिबा अप्लाई करिबा साइंस हैज इट्स इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट फील्ड लाइक एग्रीकल्चर हेल्थ होम प्रोडक्ट्स एंड अदर इंडस्ट्री तो साइंस रो डिफरेंट इम्पैक्ट डिफरेंट फील्ड रे अच्छी लाइक तुम कौन हेल्थ रे आजिकल मेडिकल ले डिफरेंट सब इक्विपमेंट यूज हवा जो आमे नुआ नुआ डिजीज विषय जानी पारुचे आउ से डिजीज को आजिका डेट रे कैंसर भड़ी एते बड़ डिजीज भी कौन हे पारुची क्योर हे पारुची ड्यू टू साइंस आजिका डेट रे लिवर ट्रांसप्लांट ठू आरंभ करी किडनी ट्रांसप्लांट जाए कौन हो पारुची संभव हो पारुची ड्यू टू साइंस बुझेला कि नहीं एग्रीकल्चर रे डिफरेंट कौन एड यूज करबा जोगु आमको बहुत कम समय भितरे प्रचुर परिमाणर प्रोडक्ट मिली पारुची कहा द्वारा होची साइंस द्वारा होची लीजर टाइम रे साइंस एते डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल बेस्ड गेम तैयारी कर दे जे आम मानकू बोर लागुनी दैट इज ऑल्सो साइंस मोबाइल तैयारी कर जोटा कि तुम हाथ में 24 घंटा रोची एबे भी अच्छी तुम एबे भी पढ़ुच दैट इज ऑल्सो साइंस सो साइंस आमको एते सारा जिनस दौची इट हैज भास्ट इम्पोर्टेंस इन बिल्डिंग नॉलेज व्हिच इम्प्रूव थिंकिंग रीजनिंग क्यूरियोसिटी एंड ओपन माइंडनेस साइंस आमर कौन करुची थिंकिंग पावर को बढ़ाऊँगी डेफिनेटली मुझे अंडरलाइन करिया चाहिए थिंकिंग पावर बढ़ाऊँगी आमर क्रिएटिविटी पावर बढ़ाऊँगी आमर क्यूरियोसिटी को बढ़ाऊँगी आम माइंड ब्रोड होउची आम माइंड ओपन होउची आमे नुआ नुआ कथा भाबिबा को चेष्टा करूचे तो साइंस आजिका डेट रे हेल्थ हैजार्ड सब जाने तुमको जो कहूली हेल्थ हैजार्ड डिफरेंट डिजीजेस होची ह्यूमन प्रॉब्लम को सॉल्व करिया पई कि साइंस हेल्प करची एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को भी सॉल्व करिया पई साइंस आल्सो हेल्प करूची सुनामी ठू आरंभ करी बात्या बन्या जहाँ भी आसुची आमे आगुरु जानी पारुचे सो दैट आमे अलर्ट हे पारुचे आउ मेजर प्रिकॉशन नहीं पारुचे आउ सेथुरु बंची पारुचे तो साइंस द्वारा केते कौन होची ना तो साइंस इज रिसेंट ईयर हैज चेंज आवर एंटायर एग्जिस्टेंस नाउ साइंस इज कंट्रोलिंग द वर्ल्ड साइंस कौन करची रिसेंट ईयर आमर एग्जिस्टेंस को चेंज कर देची कोरोना भलिया केते बड़ महामारी रु ए साइंस द्वारा ही आमे बंची पारिचे वैज्ञानिक माने से कोरोना को डिफिट करबा पाई जो नुआ नुआ वैक्सीन तैयारी करी आम बॉडी रे इम्प्लांट कले सो दैट आमे बंचिले तो साइंस द्वारा संभव होइछि ना नहीं रिसर्च द्वारा संभव होइछि ना नहीं आमे जते जानि न थांते से कोरोनाटा कोन यदि साइंस न थांता आमे टोटल जानि पार न थांते जे से कोरोनाटा कोन एबे सिना जानचे गोटे भाइरस यदि साइंस ही न थांता के इन्वेंट करथांता जे कोरोना गोटे भाइरस बोली तो आम जानी ही पारि न थांते जेटा रोगटा कौन तार क्योर केमती करते तो ये सबू संभव हो पारुची साइंस जोगु ना नहीं बुझीला एबे पढ़िबा साइंस उपरे हमर गोटे आइडिया आसीगला जे साइंस कौन तार मीनिंग कौन तार कौन कौन स्कोप अच्छी तार नेचर कौन एंड तार इम्पोर्टेंस कौन देन आमे आसीबा हमर जो बुक मेन फिजिकल साइंसटा कौन तो जो माने फिजिक्स ऑनर्स रे पढ़ी थिबो तम मन तो जानि थिबो फिजिकल साइंस कौन बट जो माने भी पढ़ी न फिजिक्स ऑनर्स नहीं कि से माने +2 रे तो जानि थिबो जे फिजिकल साइंस कौन काहा को डील करे फिजिकल साइंस रे कौन हेतिला न्यूटन मुंड रे एप्पल छिंडी थिला ना नहीं तो एग्जैक्टली फिजिकल साइंस इज द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस दैट स्टडीड नॉन लिविंग सब्सटेंसेस इन कंट्रास्ट टू लाइफ साइंस और फिजिकल साइंस भितर कौन डिफरेंस अच्छी ना लाइफ साइंस रे आमे लिविंग सब्सटेंस उपरे पढ़ू और फिजिकल साइंस रे आमे नॉन लिविंग सब्सटेंस उपरे पढ़ू बुझीला देन आमे बेजिबा नेक्स्ट कौन ना फिजिकल साइंस रो कौन कौन ब्रांचेस सबू अच्छी
Branches of physical science. Physical science, physics, natural physics, and physical science that involve the study of matter and its motion through space and time, along with related concepts such as energy with force. More broadly, it is the general analysis of nature conducted in order to understand how the universe behave. आम यूनिवर्स केमिति बिहेव करुची, मैटर्स केमिति, टाइम, मैटर, मोशन केम सब होची, से सब होची फिजिकल साइंस. The branch of physics, astronomy, the physics, chemistry, evolution of such objects, gamma ray, burst, cosmic, microwave, background radiation, all the radiation studies, sun, moons, ग्रह उपग्रह जहाँ आम पढ़ुचे, एस्ट्रोलोजी जहाँ आम पढ़ुचे से सबू केमी केमिकल कंपोजिशन कौन रोचे. खाली फिजिकल साइंस रे फिजिक्स आसुनी, केमिस्ट्री भी आसूची, आउ एस्ट्रोलोजी भी आसूची. तो कौन केमिति केमिकल रिएक्शन होची, केमिति अल्फा रे, गामा रे, यूवी रेज, रेडिएशन, सन, मून, आवर सबू ग्रह उपग्रह विषय एवरी डिटेल्स कहा जो आम जानी पाचे, फिजिकल साइंस जो जानी पाचे. आज आम ये फिजिकल साइंस जो चंद्र रे जाई पहुंची गले ना नहीं, चंद्रयान रे, मार्स रे पहुंची पाचे कि नहीं. So that is science. Branches of chemistry. Each science, the term referring to the field of science, deal with the planet Earth. It is the study of how natural environment works, how it involves its current state. It includes study of atmosphere, hydrosphere, lithosphere, and biosphere. Then structure of science. Science ro structure पढ़िबा. साइंस रो स्ट्रक्चर को दी भाग रे विभक्त कराई. गोटे है सब्सटैंटिव स्ट्रक्चर, गोटे है सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर. सब्सटैंटिव स्ट्रक्चर रे आमे पढ़ुचे फैक्ट, कॉन्सेप्ट, थ्योरी, लॉ, जनरलाइजेशन, प्रिंसिपल एंड डेफिनेशन. आउ सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर आमे पढ़ुचे मेथड, प्रोसेस, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड इन्फरेंस. हैला सब्सट्रैक्टिव स्ट्रक्चर आम कौन पढ़िले. इट रिप्रेजेंट द मेजर कॉन्सेप्चुअल स्कीम व्हिच कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक नॉलेज यूज्ड इन साइंस, व्हिच इंक्लूड कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, जनरलाइजेशन, लॉज एंड थ्योरीज. सब्सटैंटिव स्ट्रक्चर इज कैटेगोराइज इनटू टू. एटा पुणी फर्दर डिवाइड होती एम्पिरिकल नॉलेज को लेकिन आउ थियोरिटिकल नॉलेज को नहीं. एम्पिरिकल नॉलेजटा हूँ कौन ना डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन. तुम जो नॉलेजटा गेन कर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन रु कि किसी गोटे इंस्ट्रूमेंटाल ऑब्जर्वेशन रु बा किसी गोटे फैक्ट रु तुम जो नॉलेजटा गेन कर कहले आम एम्पिरिकल नॉलेज. थियोरिटिकल नॉलेज माने कौन, कॉन्सेप्ट को बुझीबा, तापर तार प्रिंसिपल को बुझीबा, तापर तार जनरलाइजेशन करबा, तार लॉस थ्योरी पढ़िबा, देन हाइपोथेसिस करबा. माने एम्पिरिकल नॉलेजटा होची तमे देखिलो आउ नॉलेज गेन कलो. तमे देखुच पंखाटा बुलुची तो तमे जानलो जे देखुच इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टेड हेची, स्विच मारिबा द्वारा पंखा बुलुची. दैट इज द डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन जे आ द्वारा करंट पास होबा जोगु पंखाटा बुलुची. बट पवनटा बहुची, तमे गोटे हाइपोथेसिस लगेबो जे मे बी वर्षा आसीबो बोली पवन बहुची, कौन मे बी एटा जोगु सेटा हेची, सेटा जोगु. दैट इज द हाइपोथेसिस. दैट हाइपोथेसिस मे बी करेक्ट और इनकरेक्ट, बट द डिफरेंस इज द एम्पिरिकल नॉलेजटा सब बेले कौन होता है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होता है, और यहाँ गोटे कॉन्सेप्ट उपर बेस होता है. द इनफॉरमेशन एक्वायर्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड एज एम्पिरिकल नॉलेज. जोटा मुझे तुमको कहली द नॉलेज सो एक्वायर्ड, वेरीफाइड एंड इट्स फास्ट लेवल ऑफ नॉलेज. एटा ऑब्वियसली तुम देखिल, जानिल, नॉलेज गेन कल, एटा होची फास्ट लेवल, तुमरो फास्ट लेवल ऑफ नॉलेज. तादर तुम कौन देख डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन. तार फास्ट पॉइंट कौन थी तुम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन. द ऑब्जर्वेशन मेड डायरेक्टली बाय सेंस और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन आर डायरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर व्हाइल बॉइलिंग वाटर इन अ क्लोज पैन. तुम देख ये हिट दि जाऊँगी जो पानी गरम होची वाटर वेपर उपरक आस, दैट इज डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन. देन इंस्ट्रूमेंटाल ऑब्जर्वेशन कौन ना ऑब्जर्वेशन विथ द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट. धर
कौन से गोटे इंस्ट्रूमेंट को यूज करके तुम ऑब्जर्व कल दैट इज नोन एज इंस्ट्रूमेंटल ऑब्जर्वेशन किंतु ऑब्जर्वेशन तुम ही करिच बट से कौन से गोटे इंस्ट्रूमेंट को यूज करिच हैला मेजरिंग द डायमीटर ऑफ स्मॉल स्पीयर रो डायमीटर को तुम मेजर कल दैट इज तुम देखिल जे आई स्पीयर रो डायमीटर टा होची एति केमे जानलो ना गोटे मेजर कल गोटे मेजरिंग टेप नहीं कि ताको मेजर कल देन facts are defined as records of events and event are thing we observe happening and make them happen facts माने स्विच मारले फैन जलेगा हैला देन theoretical knowledge कौन theoretical knowledge होची after acquiring the empirical knowledge scientists precise facts and establish cause and effect relationship among the observed phenomena and then try to explain and describe observed event and phenomena कौन हुए ना empirical knowledge रू साइंटिस्ट माने जो फैक्ट को आनती ताकू रिलेट करिकरी से इवेंट रो फेनोमेना को आकलन करती दैट इज तमरो थियोरिटिकल नॉलेज कॉन्सेप्ट कौन कॉन्सेप्ट आर जनरलाइज्ड आइडिया कॉन्सेप्ट होची गोटे तो मतलब गोटे कॉन्सेप्ट देलु गोटे नुआ गोटे कौन गोटे नुआ जिनस करवा गोटे केमती गोटे ए जो सजासजी गोटे आइडिया देलु कॉन्सेप्ट देलु तो सेटा होची तमरो आइडिया कॉन्सेप्ट भ्यारी फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ए जो कॉन्सेप्ट तुम जो देखुथिबा आजिकल सब ब्लॉगिंग करछन्ती तो से ब्लॉगिंग रे तांकर कंटेंट क्रिएटर बोली गोटे जिनस तुम शुणी आई एम अ कंटेंट क्रिएटर तो दे प्रोवाइड द कॉन्सेप्ट्स बुझीला आइडियाज कॉन्सेप्ट्स आर फैसिलिटेटेड बाय लर्निंग थ्रू एक्टिविटी conceptual scheme a conceptual scheme emerges a consciousness of pulling together several major concepts then principle पढ़िबा principle are formed when generalization based on many direct observation and demonstration are made then law कौन साइंटिफिक लॉ अप्लाई करिबो हाइपो थ्योरी ता विषय भल से जानिबो ताको एक्सप्लेन करिया को ट्राई करिबो देन हाइपोथेसिस लगेबो देन सिंटैटिक स्ट्रक्चर हमें पढ़िबा हाइपोथेसिस लगेला परे जो कंक्लूजन ने हमें पहुंचीबा दैट इज एम्पिरिकल स्ट्रक्चर ऑफ साइंस देन सिंटैटिकल स्ट्रक्चर को फर्दर डिवाइड करा जायछि साइंटिफिक इंक्वायरी एंड साइंस इज अ प्रोसेस तमे कौन करिबो ना एठी तुम जानिया पाए फास्ट तुम क्वेश्चन पचारिबो तापर से क्वेश्चन नु नॉलेज को गेन करिकरी कौन करिबो एक्सपेरिमेंट करिबो कंक्लूजन बारंबार एक्सपेरिमेंट करिबो बारंबार एक्सपेरिमेंट कला परे कंक्लूजन रे पहुंचिबो द लिटरल मीनिंग ऑफ इंक्वायरी scientific inquiry means the literal meaning of inquiry is to question or to seek information to investigate so it can be defined as being inquisitive asking question or trying to find out something for oneself following at the operation of scientific inquiry कौन करिबो observation करिबो observing questioning experimenting comparing inferring generalizing communication and applying हैला तापर देन तमे पढ़िबो वैल्यू ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस ये जो फिजिकल साइंस पढ़िबार वैल्यू कौन आ द्वारा हमें काहे कौन वैल्यू मिलुची The term value is derived from the Latin word जार ना होची valeri which means to be strong or vigorous. So going to the definition value is that which satisfy human desire. किए कहिथिले अर्बन कहिथिले वैल्यू होची सेटा जोटा कि ह्यूमन डिजायर को सैटिस्फाई करूची ए वैल्यू इज ए कांसेप्ट व्हिच ग्रुप्स टुगेदर सम मोड्स ऑफ बिहेवियर इन आवर सोसाइटी वैल्यू होची गोटे कांसेप्ट जिए आम सोसाइटी रो किछि बिहेवियर को ग्रुप करिकरी एक्सप्लेन करे जोटा कि ब्रोन्स्की कहिथिले सम वैल्यूज ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस आर
फिजिकल साइंस पढ़ेबार जो भैल्यूज अच्छे जोड़ा कौन फास्ट है इंटेलेक्चुअल वैल्यू ऑब्वियसली छुआ मानकर थिंकिंग पावरटा बढ़ाए प्रोब्लेम सॉल्विंग पावरटा बढ़ाए डेफिनेटली तो इंटेलेक्चुअल वैल्यू फिजिकल साइंस पढ़ा द्वारा छुआंकर प्रोब्लेम सॉल्विंग कैपेसिटी बढ़े जोटा इंटेलेक्चुअल कम्युनिकेशन थिंकिंग बढ़े तापर कौन हुए ना देन इनक्वारी करिवार कैपेसिटी बढ़े देन तले बजे यूटिलिटेरियन वैल्यू इट इज वेरी एसेंशियल टू हैव सम elementary knowledge of physical science for becoming a full member of society रे communicate करिबार capacity बढ़े vocational value knowledge of physical science forms the basic of many vocational studies like medicine engineering agriculture and other profession तो physical science पढ़िबा द्वारा छुआ माने डिफरेंट फील्ड रे उत्तीर्ण होबा पाई डिफरेंट फील्ड रे डिफरेंट काम करबा पाई उत्तीर्ण होबा पाई कैपेबल हुंती लाइक से माने एग्रीकल्चर रे भी आगु को जाई परिबे मेडिकल रे भी आगु को जाई मेडिसिन रे भी आगु को जाई परिबे इंजीनियरिंग रे भी आगु को जाई परिबे तो सेमानंकर वोकेशनल वैल्यू माने तांकर पैसा रोजगार करिवार क्षमताटा बढ़े कल्चरल वैल्यू फिजिकल साइंस हैज एडेड द ग्रोथ ऑफ consciousness by making us more aware of the universe we live in obviously आमे जो यूनिवर्स रे रहुचे तार वैल्यू हमकू तार कस्टम तार कल्चर को भी जनाए फिजिकल साइंस पढ़िबा द्वारा मोरल वैल्यू इट टीचेस द पीपल टू बी इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल ऑब्वियसली फिजिकल साइंस पढ़िबा द्वारा छुआ माने कौन हुंती ऑनेस्ट हुंती सत्य कहबा पाई कौन हुंती प्रेरित हुंती कारण से माने नेचुरल इवेंट को स्टडी करंती देन एस्थेटिक वैल्यू इट इज द वन ऑफ द डीपेस्ट नीड ऑफ ह्यूमन नेचर व्हिच manifest itself as a desire of beauty obviously physical science पढ़िबा द्वारा नेचर और ब्यूटी हमको जाना पड़े disciplinary value the science education will develop the positive attitude like open mindedness logical reasoning it helps to solve problem in life and lead happy life obviously साइंस एंड द्वारा हमको आम भितर पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलपमेंट हुए आमर लॉजिकल रीजनिंग थिंकिंग पावरटा बढ़े तो साइकोलॉजिकल वैल्यू कौन टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस इज एसेंशियल फॉर डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड डेफिनेटली लर्निंग बाय डूइंग लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग डेफिनेटली गांधीजी हमको कहते लर्निंग बाय डूइंग काम करी पढ़िबा आउ लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग पार्श्व जिनस को ऑब्जर्व करी ता भितर ज्ञान को आहरण करबा देन 8th रे आछि तमरो सोशल वैल्यू लाइक कोऑपरेशन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग द एटीट्यूड ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर इटीसी इंस्पिरेशनल वैल्यू कौन द टीचर शुड टीच अबाउट द लाइफ हिस्ट्री and work of great scientists in such a way that students should get inspired obviously आम साइंस को बहुत सारा साइंटिस्ट मैंने डिफरेंट अवदान देती तो तांकर सब हिस्ट्री तांकर वर्क विषय आम जो स्टूडेंट मानू कहवा तो से माने इंस्पायर्ड हेबे हैला दैट इज द इंस्पिरेशनल वैल्यू देन आमर नेक्स्ट क्वेश्चन आछि कोरिलेशन बिटवीन फिजिकल साइंस एंड अदर सब्जेक्ट फिजिकल साइंस रो अदर सब्जेक्ट सहित कौन कोरिलेशन रोची डेफिनेटली कोरिलेशन रोची के मन कोरिलेशन रोनी कौन कोरिलेशन रोची ना कोरिलेशन सिग्निफाइज द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस सब्जेक्ट ऑफ द करिकुलम ऑब्वियसली करिकुलम रे हमें जहाँ सब सब्जेक्ट पढ़ुचे ता भितर कोरिलेशन रहिबा दरकार सो दैट गोटे छुआर थिंकिंग एबिलिटी ग्रो करिबो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैव कोरिलेटेड विथ लाइफ एंड सो दे हैव correlated with each other to explain any subject in meaningful way correlation is needed then कहार कहा सहित कौन कोरिलेशन रही फिजिकल साइंस रो मैथमेटिक्स सहित कोरिलेशन रही ऑब्वियसली फिजिकल साइंस रे हमें मैथ को इनपुट करले ही हमें कौन सी गोटे रिजल्ट रे उपनीत होचे to know about the velocity speed etc it cannot be taught without mathematics जहाँ तो मुझे कहली गोटे वेलोसिटी हो बा गोटे स्पीड को बा टाइम को मेजर करबा को हेले हमको मैथमेटिक्स डेफिनेटली दरकार टीचिंग ऑफ केमिस्ट्री विल बी इनकम्प्लीट विदाउट मैथमेटिक्स
केमिस्ट्री को पढ़ा हेल्ले भी आमको मैथमेटिक्स दरकार लाइक एटॉमिक वेट तापर तुम एटॉमिक मास कैलकुलेशन करिया को सब पाई आमको मैथमेटिक्स रो दरकार रही। The biological science, the teacher has to maintain, calculate the size of different organelles which acquired knowledge of unit and conversion. Obviously, biological science रे भी mathematics रो दरकार रही। तो biological science रे भी बायोकेमिस्ट्री अच्छी जोटा कि केमिकल सहित बायोलोजी रिलेशन को एक्सप्लेन करुच्ची। बायोफिजिक्स अच्छी जोटा कि तुम पढ़ुच कौन ना मीन मीडियन मोड को रिलेशन रिग्रेशन ऑल वी स्टडीड इन बायोलॉजी दैट इज रिलेटेड टू फिजिकल साइंस। देन फास्ट आम कौन पढ़ते फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। देयर आर क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। वी कैन से देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। हाउ आम देखा जे स्टैटिस्टिक काइनेमेटिक्स एंड कोलिजन आर बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स। मेजरमेंट हो स्टैटिस्टिक हो काइनेमेटिक्स हो सबू कहा ऊपर बेस अच्छी मैथमेटिक्स। ई इक्वल टू एमसी स्क्वायर। एमसी स्क्वायर आम केम जानिबा स्क्वायर मीन्स कौन। So chemistry and mathematics, we can say that every branch of chemistry to some extent depend on mathematics to some extent. Balancing in equation, obviously balancing equation ने भी हमको mathematics दरकार होची। Science and literature, definitely science and literature has a deep relation. Language is the property of literature. No matter and subject of science can find expression unless to take help in language. साइंस एंड सोशल साइंस, डेफिनेटली सोशल साइंस और साइंस रो भी कौन रोची कोरिलेशन रोची। आम रेनफॉल हो क्लाइमेट हो प्लानेट हो रोटेशन ऑफ क्रॉप हो एग्रीकल्चर हो अर्थ हो ए सबू आम साइंस और सोशल साइंस सहित सोसाइटी रही साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी इज ऑल्सो इनक्लूड। साइंस एंड आर्ट्स, आर्ट्स हैज टू फॉर्म, टू फाइन आर्ट and useful arts. It useful art we find the application of principle and fact of science. Arts रे भी हम साइंस रो रिलेशन रोची. क्राफ्ट रे भी साइंस रो रिलेशन रोची. क्ले हो वुड हो मेटल हो ए सब भी सहित साइंस रो भी रिलेशन रोची. और साइंस एंड म्यूजिक डेफिनेटली डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट केमती बिल्ड होची, इंस्ट्रूमेंट रो साउंड केमिति आछी, ध्वनि केमिति तैयारी होची, ध्वनि केमिति बाहरुची ए सबू होची साइंस और म्यूजिक रो कोरिलेशन. साइंस और हाइजीन, डेफिनेटली साइंस होची हमको बुझौची हमर हाइजीन कौन. तो फाइनली आमे जानिले ऑल द सब्जेक्ट आर टॉट टू फीड स्टूडेंट और फीड चिल्ड्रेन इन द लाइफ इनटू लाइफ एंड हेल्प देम अंडरस्टैंड एंड appreciate it. Correlation help student to achieve unity of knowledge and develop worthy invest and attitude for acquiring knowledge. बहुत बढ़िया जिनसटा जे स्टूडेंट मानक भितर कौन हुए नॉलेज आउ इंटरेस्ट आउ एटीट्यूड डेभलप हुए साइंस पढ़िबा द्वारा कौन करिबा पाई नॉलेज को गेन करिबा पाई. So science is very much important in our life. एबे तमरो फर्स्ट यूनिट टा सरीगला फिजिकल साइंस रो. नेक्स्ट क्लास रे हमें सेकंड यूनिट टा पढ़िबा. धन्यवाद पिला माने. आशा करी आपण माने क्लास टी पूरा देखिथिबे, क्लास टी आपण पूरा बुझिथिबे. जहाँ भी आपण डाउट रहिबो आपण हमको कमेंट रे जणाई परिबे. जहाँ भी आपण को डाउट रहिला जदि आपण नोट्स को परचेस करबा को चाहउछली स्क्रीन रे हम नंबर शो करूची, आपण सेठू परचेस करि परिबे. आउ हमर 2024-25 पई एडमिशन स्टार्ट हे जाईची. जो माने भी जे कोनसी पिला इंटरेस्टेड अछंती आपण हमको कांटेक्ट करी जणाई परिबे. मो स्टार्टिंग रू भी पिला को कहिची आपण एडमिशन करंतु न करंतु डिटेल्स बुझंतु, ठकामी जो बंचंतु कि आपनकर कौन कौन डॉक्यूमेंट दरकार, आपनकर जो कोर्स भी आपन को एजेंट के कौन से इंस्टीट्यूट कहूची से कौन कौन इंक्लूडिंग रहिबो, कौन कौन एक्स्ट्रा आपन को माने आपन को एजेंट माने हिडन चार्जेस करके नहीं जाई परिबे. तो आपन हमके करंतु कि न करंतु डिटेल्स फोन करके बुझंतु, जहा द्वारा आपन आपनकर संपूर्ण डाउट क्लियर करि परिबे. तो धन्यवाद पिला माने. जय जगन्नाथ.